Now the stock screening criteria. What are the criteria now? Number one, first condition, and the first condition is for the stock screening for the any firm that they are considering to study it, that whether that firm analyzing it, that whether the firm is Sharia compliant or not. They see that first of all, this is the main condition that cannot be violated for that index. And what is that condition? That the core business of the investee company should be halal. For example, tobacco. We will not see that whether they are earning in a halal way, they are completing the odd term and conditions of murabaha, ijara. No. First of all, we will see that whether the core activity, core business itself is halal or not. Then we see that it is a tobacco. Tobacco is discouraged and the prohibited on the basis of Sadd Zarai into the Islam. So that is why its core activity is not halal. Then this firm will be rejected to analyze, to consider for analysis. इसको हम एनालिसिस के लिए कंसीडर भी नहीं करेंगे. हम इसको हम कहेंगे कि ये कंपनी जो है ये रिजेक्टेड है. इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रूट इट आउट. We will not check whether it is we will not check out its Sharia compliance, क्योंकि ये सीरियस इसका कोर बिजनेस एक्टिविटी ही हराम है. सेम एज casinos, core activity of the casinos is gambling. So that is why if a firm which is titled as casino and which basic business is casino based, gambling based, so that firm will not be considered in the analysis. Accordingly, investment in shares of conventional banks, because the conventional banks, you know that HBL, Al Falah, UBL, all these banks are the interest based banks. So that is why their core activity is interest. They earn on the interest basis. So that is why it is not allowed to invest in the shares of these banks. Why? Because their core activity, core business, main business is prohibited. Accordingly, investment in shares of conventional banks, तो conventional banks भी इस लिस्ट में शामिल नहीं हो सकती. अच्छा जी, इंश्योरेंस कंपनीज लाइक स्टेट बैंक. आप में से किसी का ना माइक ओपन है, ये माइक सॉरी स्पीकर ओपन है. आवाज कम करने, चूंकि वो गूंज कर मेरी तरफ आवाज आ रही है. और बल्कि आप यूं करें, अपने माइक को ना साइलेंट पे रखें. जब मैं कहूँ तो फिर बात कर लें, या किसी का क्वेश्चन हो तो. अच्छा जी, अकॉर्डिंगली investment in shares of conventional banks, insurance companies like State Bank, State Life Insurance. State Life Insurance is not allowed, conventional insurance है. और इस बारे में भी कोई दो राय नहीं है कि जो conventional insurance है, their core activity is interest based. Now takaful companies are here. They alternate on the Islamic finance base. So that is why there is no need to go to the conventional insurance. Leasing companies, conventional leasing companies, because uh, uh, the conventional leasing companies they call it leasing companies, but actually there is no lease. What asset, what type of asset they usually give on lease? That is capital. In documents they write asset. For example, you want to buy a vehicle and they say that we give you vehicle, and they actually issue a loan on your name, and then buy for you, and they hand over to you, and they write that we sold a car to the customer. How they can sell? Because it is not a sale contract. And they also do not write that we lease out the asset to the client, because
the ownership will remain with the conventional bank. In conventional lease, what actually happens is that ownership title remain with conventional banks, but risks are transferred to the client, which is against the even conventional finance. Conventional finance is also says that risks are associated with ownership. So the conventional leasing companies are nothing but fraud. तो इस वजह से वो जस्ट लीज का नाम शो करते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट लीजिंग कंपनीज. अच्छा जी, मुदारबा कंपनीज, कंपनीज डीलिंग इन अल्कोहल एटसेट्रा आर नॉट परमिसिबल. अच्छा, मुदारबा कंपनीज which usually now the mudarba companies are being supervised by the Sharia boards. But before this, the mudarba companies were also found involved into the non-Sharia compliant एक्टिविटीज़. तो इस वजह से ये वो कंपनियां हैं जिनकी कोर बिजनेस जो है वो जायज़ नहीं होता उनके, तो उनको जो है वो इस के एम आई इंडेक्स के लिए नाअहल समझा जाता है, इन एलिजिबल कंसिडर किया जाता है देख, और उनको इवन पहले फर्स्ट स्टेप पर ही उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता कि वेदर वी विल एनालाइज इट और all such type of firms are totally rejected. ये पहला स्टेप होता है कि हमने ये चेक करना है कि क्या इस कंपनी को जिसको हम तजिया करेंगे क्राइटेरियाज का, बेंचमार्क्स का, क्या उसका कोर बिजनेस भी हलाल है या नहीं. The second, now these are the benchmarks and the criteria. Interest bearing debts, they must be less than 40% of total assets. When we call debts, it means that receivables. Interest bearing debt receivable should be less than 40% of total asset. Interest bearing debt includes bonds, TFCs, conventional bank loans, finance lease, preference share, preference stock, and total interest bearing debt must be less than 40% of the total assets of the investee companies. So, for example, if there is a company and it shows 100 rupee as a total asset, then this point says that 60 60 rupee or the 61 rupee must be earned on totally halal basis. If there is a 39%, if there is a 39% earning has amount has been earned on the interest from the interest bearing debts like bonds, price bonds, etc., or the T-bills and the conventional loans, finance lease, preference stocks, or then it is it will be considered that it is Sharia compliant. तो वो कहता है कि 40% से कम अगर इंटरेस्ट बियरिंग लोन से आम इनकम है तो वो शामिल की जाएगी 40% से कम में. अगर 40% के इक्वल होगी, इफ इट इज इक्वल टू 40% or the above the 40%, then it will be considered Sharia non-compliant. But still, you must keep one thing in your mind as a student of Islamic finance, that it is a tolerance level in the society of this era where interest is ruling elite, you can say that, because this is the time of capitalism. Everywhere is capitalism.
So to encourage the firms to come toward the Islamization of business, to attract them, they say that okay, if you are your core, your business, your income is coming through 60% majority of your income, 60% income is coming from permissible way, then we will consider you as a Sharia compliant firm, to encourage them so that they increase their level of Sharia compliance. इस वजह से ये टॉलरेंस लेवल है, अदरवाइज ये हम नहीं कहते कि ये हमेशा रहना चाहिए टॉलरेंस लेवल। तो 39% अगर किसी कंपनी का वो सूदी कर्जों की मद से, कर्ज दयून से, डेट से आता है, तो वो कहते हैं कि वो टॉलरेबल है, फिर भी हम उसे कंसीडर करेंगे कि ये शरिया कंप्लाइंट है। अच्छा जी, उसके बाद है नॉन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 3% ऑफ टोटल एसेट्स। Non-Sharia compliant investments include investments in conventional mutual funds, conventional money, market instruments like bonds, PIBs, FIBs, CDs, and T-bills, treasury bills. तो ये मुख्तलिफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जो सूदी बैंकें और स्टेट बैंक के टी बिल स्टेट बैंक इशू करती है, तो ये टी बिल्स वगैरह भी सूदी बिल्स होते हैं। इनके अंदर अगर किसी फर्म ने अपने एसेट, टोटल एसेट के 33% एसेट्स जो अगर वो यहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि भाई वो फर्म जो है एलिजिबल नहीं होगी इस बात की कि हम उसे कंसीडर किया करें एनालिसिस के कि वो शरिया कंप्लाइंट है या वो इस स्क्रीनिंग क्राइटेरिया की लिस्ट में शामिल की जाएगी। नहीं, हाँ, अगर वो 33% से लेस है, यानी कि 32% है, तो फिर वो कहते हैं कि हम उसे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो कहते हैं कि हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। Non-Sharia compliant investment must be less than 33% of the total assets of the investee company, यानी इन्वेस्टी कंपनी का मतलब जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट करना है या जिस फर्म में। Non-compliant income must be less than 5% of total revenue. अच्छा, पहले हो रहा था कि टोटल की बात चल रही थी, अब आ रहा है टोटल रेवेन्यू, अर्निंग, इनकम। भाई आपकी जो टोटल इनकम होती है, वो कहते हैं कि उस इनकम, टोटल इनकम का 5% से कम अगर गैर शरई तरीकों से आता है, तो फिर भी उस फर्म को हम उस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे KMI की। हम उसको KMI से बाहर समझेंगे और कहेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि इनका 5% या 5 से ज़्यादा जो है वो नॉन कंप्लाइंट तरीकों से आ रहा है, जिस तरह गैम्बलिंग, सूद, नाइट क्लब्स, प्रोस्टिट्यूशन, कैसीनोज, टोबैकोज, अल्कोहल, तो इन सारी सारी चीज़ों से आता है। तो ये नॉन कंप्लाइंट कंपनीज हैं, तो इस वजह से इसका रेवेन्यू ही हराम है, तो फिर आप इसको अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नॉन कंप्लाइंट इनकम शुड बी लेस देन 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू।
پھر ہے کہ ان لکوڈ ایسٹ ٹو ٹوٹل ایسٹ ریشو. ان لکوڈ ایسٹ ٹو ٹوٹل ایسٹ ریشو شوڈ بی گریٹر دین 20%. اس ان لکوڈ ایسٹ کے اندر آ جاتے ہیں مختلف پلانٹس لگے ہوتے ہیں، اکوپمنٹ ہوتے ہیں، بلڈنگ انفراسٹرکچر جس کو کہتے ہیں، آفیسز وغیرہ، سب کچھ ملا کے وہ گریٹر دین 20% ہونا چاہیے. اچھا، اس کی شرط اس لیے لگائی کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ بھی اس کا ان لیکوڈ ایسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو، اور وہ اگر ان لیکوڈ ایسٹ کسی کمپنی کا زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے تو بہت کم ہی ہے، اور جب انویسٹ کرنے کے لیے کم ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پر پروفٹ آپ کے لیے چموا کے بہت کم ہوں گے. تو اس وجہ سے یہ شریعہ سکریننگ کرائٹیریا کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کیا گیا. مارکیٹ پرائس پر شیئر must be greater than net liquid assets per share. Net liquid assets per share is equal to total assets minus illiquid assets minus total liabilities divided by number of shares outstanding of the investing companies. یہ اس کا فارمولا ہے. So market price per should be greater than the net liquid assets per share. دیکھیں، اگر کسی کمپنی کا جو نیٹ لیکوڈ ایسٹ ہے اس کے پرائس جو ہے وہ کم ہو اور مارکیٹ پرائس زیادہ ہو تو وہاں انویسٹ کرنے میں فائدہ ہوگا. اور اگر کسی کی نیٹ لیکوڈ ایسٹ پر شیئر زیادہ ہے لیکن مارکیٹ پرائس اس کی کم ہے اور وہ ورتھ اپنے خود زیادہ شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فراڈ کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو اس کا مارکیٹ پرائس شیئر پر شیئر ہے وہ اس کی نیٹ لیکوڈ ایسٹ پر شیئر سے زیادہ ہونا چاہیے.